data is generated at application layer. Application layer से layer 7 बना क्योंकि 7th layer पे आती है application layer. Rest of the session layer, presentation layer, we discussed about them, but we don't need to know as of now about them because we don't consider हमें ये troubleshooting option necessary नहीं होता, and this is all taken care during operating system ही इन सब चीजों का care करता है. So this is our data. ये go generate application किसी भी ब्राउजर में generate हुआ और इसको ये है data वाज एस बिचार your data you see in CPU aspect watch so kind of process depending upon this TCP. So after your data is generated, it will first choose क्या इशा TCP communication की UDP communication. ये कहाँ पे होता है अगर आपको कल का याद होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे. Most of the things are TCP communication. That's why इस डेटा के साथ एक और हेडर ज्वाइन होगा यूगोस्लोन पानो डेटा और इसके साथ one more header will be attached, which is your TCP header. Okay, this is your original data और इसके साथ TCP header जुड़ेगा. Yesterday I showed you how TCP header looks like. You don't need to go through the details as of now. Just remember TCP और UDP में हमने थोड़ा बहुत फर्क भी देखा, but leave it. वो आप आहिस्ता-आहिस्ता इन सबको समझें. Then we will go to network layer. Network layer में कैसा header attached, which is your IP header. Okay, एक तो अपना ये आपको ऐसे कानून TCP UDP ये जो सो रही है सा CPU aspect NIC card aspect whatever. One more header will be attached, which is your IP header. IP headers में जो main information आत्म मगर Z information है क्या आत्म में पत्ती वाले चीज information, but we will talk about source IP address, destination IP address. सोर्स आईपी एड्रेस जो मशीन का अपना आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जहां पे आपने रिक्वेस्ट की हो, जो आपने डेटा जहां पे आपको ट्रांसफर करना होगा. तो सोर्स ये मशीन अपना लगाएगी एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये कैसे फेच. फॉर एग्जांपल हियर वी आर गोइंग टू google.com, सो इट विल फेच द आईपी एड्रेस ऑफ google.com का सर्वर जो भी होगा उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यहां पे लगाएगा. देन वी हैव अ नेटवर्क लेयर, सॉरी डेटा लिंक लेयर. यहाँ पे one more header will get attached and which will be your MAC header. Here content to same, just one more header will be there. और डेटा लिंक लेयर में सोर्स मैक कहता है नहीं, इसका अपना मैक जो होगा, डेस्टिनेशन मैक जहाँ पे इसको नेक्स्ट ट्रांसफर करना होगा डेटा उसको भेजेगा. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. आईपी हेडर एस, टीसीपी हेडर एस एंड देयर विल बी अ डेटा. थोड़ा बहुत आप इस चीज को विजुअलाइज करो, then it will be easy. Then here the TCP and here is the data. Ultimately it will be transmitted through the physical layer. It will be depending upon the medium क्या है. अगर Wi-Fi should telecast LS signal, radio signals, NALS. अगर Ethernet है then it will use light. Ethernet ना पाई क्या by the it's a cable which we attach. So this is all about the theoretical part. Now if you want to see it क्या इस हकवाई उचित ऐसा तो नहीं दे सकते, but there are tools जो कि पैकेट कैप्चर्स करते हैं. Okay, there are tools जो कि पैकेट कैप्चर्स करते हैं. Why we need to capture the packet? So that कि अगर क्या latency issue या traffic drop issue क्या issue है, we can analyze these packets कि मसला कहाँ पे हो रहा है. क्या मसला सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी पे, क्या मसला सोर्स मैक पे, क्या टीसीपी पे. सो वी हैव टूल्स व्हिच हेल्प्स अस टू एनालाइज. और उन टूल्स में anyone okay मतलब वायर शार्क one of the famous things. You also have a cloud shark अगर कहीं क्या लाइव क्या we also check that. We use mostly wire shark and we can also use TCP dumps. थोड़ा हाई लेवल पे लिनक्स पे होता है कहाँ पे यूज हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल यूज वायर शार्क. वायर शार्क आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड दैट विल लुक लाइक दिस. इट विल शो यू couple of things here कि कहाँ कनेक्शन इस पर चुक चाहन पैकेट कैप्चर करो एंड वी कैन गो दैट. फॉर एग्जांपल अभी मैं
सॉरी पीपल, ये लाइट चली गई एंड आई वाज डिस्कनेक्टेड, आई गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वाईफाई। अच्छा, शट अप। ओके, स्क्रीन विजिबल? तो हम थे यहाँ पे, लेट मी अगेन ट्राई टू कैप्चर द थिंग्स। So this was a just about, okay, and there are tools by which we can capture the packets or analyze करने के लिए obviously. So this was all about the yesterday's topic, थोड़ा बहुत आज हमने discuss किया. Now today's topic, if you guys remember कि हमें क्या पढ़ना है, मैंने कल आप लोगों को एक topics वाली file share की थी. So this is the things which we are going to discuss. OSA model, we completed. TCP/IP, we also saw that. So OSA model is simply just a reference model of TCP/IP. Now we will discuss about internet and addressing. कल हमने थोड़ा बहुत वो addressing का भी पढ़ा था, but we will check these things in details today. Internet. Can anyone be volunteer and define what is an internet? शुद्ध है इस यूज करा, right? Network of, ये भी हम मानते हैं, network of interconnected computers. Good, very good. Anyone else? Internet, as he said, it is a cluster of networks. So पूरी दुनिया में, let's say कि ये कि गूगल दुनिया, and we have multiple networks here, here. यम क्या network does not matter. कहते हैं कि ऐसे. So multiple networks and they are interconnected with each other. Okay. Okay. Now to be very specific, यम cluster of networks क्या है? Either they are data centers, which are या तो वो आईएसपी के खुद के हैं या आईएसपी ने किसी से किसी दूसरे डेटा सेंटर के यूज कर रहे हैं. मोस्टली इंटरनेट जो क्लस्टर बना है, इट इज बिकॉज ऑफ आईएसपीज. अगर नेट आईएसपी शो पाई की तो शो मगर सारी पाई आईएसपीज है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. फॉर एग्जांपल आपका एयरटेल, बीएसएनएल, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट? बीएसएनएल. ISP and further types, tier 1 ISP, tier 2 ISP. You don't need to know about these things. Simply जो यहाँ पे इंटरनेट है, it is a cluster of networks. फॉर एग्जाम्पल एयरटेल का कोई डेटा सेंटर है, हमने एयरटेल से ब्रॉडबैंड मंगवाया है और हम उसी का इंटरनेट यूज कर रहे हैं. सिंपली हमको एयरटेल ने अपने नियरेस्ट डेटा सेंटर से कनेक्शन उठा के हमें दिया है और वो डेटा सेंटर इंटरनली बहुत ज्यादा डेटा सेंटर्स के साथ कनेक्टेड है. एंड दिस कुड बी विद इन द एयरटेल के अपने डिफरेंट डेटा सेंटर्स और विद अदर. मिसाल के तौर पर योर एयरटेल, योर आईसी पथ इंटरकनेक्टेड विद गूगल के हेडक्वार्टर्स के साथ, डेटा सेंटर्स के साथ, या इथे कि एनटीटी डेटा सेंटर के साथ, डिपेंडिंग, ठीक है, इंटरकलस्टर शिपॉन शिवारे जम. अब इस चीज से क्या होता है, जो अब आपको, यू आर अ यूजर हियर, आपको जाना है facebook.com. facebook.com की एड्रेस समथिंग समथिंग समथिंग, ओके. और इस फेसबुक इस टाइप का facebook.com, हम नियरेस्ट जो अपना जहां से हमें एयरटेल ने अपना कनेक्शन दिया, जो उसका लेटेस्ट डेटा सेंटर होगा, वहां पे जाएगा और जो डेस्टिनेशन है facebook.com, दैट करी फेच क्या मैंने शार राउट facebook.com वातनस. अगर अमिस तक इट विल डायरेक्टली राउटेड टू कैश इंटरनली ऑलरेडी कनेक्टेड कुन नत कुन जाए गूगल सर्वर या इंटरनेट क्लस्टर्स पे, और ये वहां पे जाएगा और वहां से फाइल्स लाएगा और हमें पुश करेगा. अगर ने एम्स डायरेक्टली राउट उसकी, इट विल सेंड इट टू सम अदर डेटा सेंटर और वहां से द बेस्ट जो भी इसको लगेगा कि दिस विल बी द बेस्ट पार्ट टू गो टू द गूगल सर्वर या फेसबुक सर्वर, तो ये उसको भेजेगा और वहां से हमारी रिक्वेस्ट आएगी. But whatever we discussed about this public internet. Okay, so this was a public internet. कोई भी एक्सेस कर सकता है जो भी पब्लिकली अवेलेबल हो. फॉर एग्जांपल पब्लिकली हमारा facebook.com सर्वर अवेलेबल होता है, ऐसे पब्लिक में हमारा इंस्टाग्राम. सो दीज आर ऑल पब्लिक. अगर अब आपको कोई आपने कोई वेबसाइट बनाई, यू कैन ऑल्सो यूज website.com, ऑल्सो पब्लिश इट. आप इसको किसी
सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं या अपना सर्वर मंगा सकते हैं, पत करू तथ पे सो वेबसाइट होस्ट, और फिर उस वेबसाइट को पब्लिकली एक्सेस करवाओगे, यू नीड टू इनेबल some protocols like HTTPS, FTP on that server, and you can make it publicly access. But there are few things: private access, private access. Okay, for example, उस चीज के लिए हम और एग्जांपल लेंगे योर पेजेस। लेट्स से हमारा हमने कोई बिजनेस सेटअप डाला, एंड दिस सेटअप इज इन श्रीनगर। ओके, मान गए इस हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, वी हैव नो मल्टीपल, एक तो हमारा है, लेट्स से दिस इज इन सिंगापुर, लेट्स से दिस इज इन दुबई, यूएस का सुन के हैं, ताज कैशकार सिंगापुर, एंड दिस इज यूएई, यूएई। ओके, सो मुझे इनमें इंटरकनेक्शन चाहिए, राइट? क्यों चाहिए? यू शुड बाय मे बी हमारा श्रीनगर में एक डेटा सेंटर है और इसी में हमारी सारी फाइल्स है। ये टिश्यू डेटा सेंटर यहाँ जो भी सिंगापुर में हमारा चल रहा है उस चीज के फाइल्स है। श्रीनगर वाले सिंगापुर डेटा एक्सेस करो, यूएई वाले श्रीनगर डेटा एक्सेस करो, वी नीड इंटरकनेक्शन। नाउ anyone use your brain and tell me how we will interconnect these things? What's the most common and easy method to do it? जल्दी जल्दी ओवरीगो તમે શું પાઈ કુતા ગારો છો? Very good. You guess it very rightly. हम जाएंगे आईएसपी के पास. This one ISP is we need an interconnection. Maybe office Singapore because we are not an end user. इस one में the broadband connection is. We will go to ISP और हम उसको दे सकते हैं. Teams करो request that we have a different systems, sorry, remote sites और हमें इनमें आपस में interconnection चाहिए. ISP चूंकि इसके पास ऑलरेडी क्लस्टर ऑफ नेटवर्क है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया एक इशू ISP, तो इशू वाला कोई बात नहीं, मैं आपका मसला हल करता हूँ, बट टेल मी अबाउट योर बजट। ओके, मानो कि हमें बहुत कम बजट है फॉर दिस थिंग, कि आईएसपी शुड टेल ठीक है, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, आई विल सिंपली गिव यू पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, मैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, यहाँ पे मॉडेम लगाएगा, ये गैस मॉडेम, ये लगाए मॉडेम, इट इज अ पब्लिक इंटरनेट, सॉरी एक्सेस गैस थ्रू पब्लिक इंटरनेट थ्रू। ओके, so also few things, ये ISP है कि सेपरेट IP एड्रेस दे, अभी हमने IP एड्रेस के जिक्र नहीं की, so let's leave it for now। इसने हमें एक पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन दे दिया। नाउ ये भी पब्लिक, यू थी सिंगापुर ट्रैफिक सोजा, ये पब्लिक इंटरनेट थ्रू कैसा श्रीनगर पब्लिक इंटरनेट, क्योंकि पब्लिक आ रहा है इसमें, दैट मींस इट वोंट बी सिक्योर। कैसे अच्छे से ये चीज का था क्या असल चीज था वो सड़की पे है उसको कहाँ तो, बिकॉज इट इज अ पब्लिक थिंग। हम चाहते हैं कि वी हैव द सेंसिटिव डेटा समथिंग, हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन फाइनेंस इंफॉर्मेशन पहुंचते होते हैं, वी डोंट वांट इट टू गो थ्रू द पब्लिकली। ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज अ पब्लिक इंटरनेट, it is cheap, public internet, it is cheap, but it has security reasons. Now either we can do one thing, इस लागू पाने प्राइवेट कनेक्शन इमन पान इस तुलो तार इस करो गमा इस पको हेयर तुलो तार तुलो तो खते स्कूट पत कूट लागान छे तार योर तय सिंगापुर वत, बट ऑब्वियसली इट इज इम्प्रैक्टिकल इन दीज डेज, ये परेशानी छन जरूरत क्या, बिकॉज आईएसपी ने ऑलरेडी काम किया है, तम तार मिश राउंड द ग्लोब, but we still need private access. Okay, so this is one of the method to do it, इसको हम leased line बोलते हैं, still used in military banking, तो तक खातम चुनी विचार को leased LIS क्या था स्पेलिंग में जो पाने leased line कनेक्शन इसको बोलते हैं, जो कि हम प्राइवेटली खुद कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट क्योंकि ये ऑलरेडी आईएसपी ने किया है, वी आर आस्किंग आईएसपी क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोसीजर है कि हम आपके थ्रू ही करें, बट वी डोंट नीड पब्लिक इंटरनेट इनसाइड इट। आप कुछ ऐसा फैसिलिटी हमें दो कि आप ही मुझे यहाँ पे एक नोड दे दो श्रीनगर ऑफिस में और दूसरा नोड दे दो सिंगापुर के ऑफिस में, रेस्ट आप इंटरनली राउटिंग कैसे करोगे, पब्लिक इट शुड बी अ प्राइवेटली हेल्ड। ओके, आईएसपी obviously I have these things, why are you wasting your time on leased line, why are you parishan? So it can also give us a private connection, came to the private connection ISP now, sorry, uh, प्राइवेट कनेक्शन के जो है ISP। नाउ
ये प्राइवेट कनेक्शन कैसे देता है? सो इट हैज अ डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट प्रोटोकॉल जिससे ये प्राइवेट कनेक्शन देता है. इट कैन यूज, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दोस प्रोटोकॉल, या चलो बोल भी लेते हैं. MPLS, वन ऑफ द थिंग्स. ओके, VRM, VPN, V4, यम त्रेशवे प्रोटोकॉल इकवटे पकान तेल हेकान यम दित अख प्राइवेट कनेक्शन. ओके, सो वन ऑफ द मेथड. सेकंड, थर्ड चीज वन तह लगो मजे बोज क्या दीज थिंग्स फैसिनेट यू गाइस, आई नो इट. ब्याक चीज गो कि श्रीनगर में CEO यह खड़ूस यह ना क्योंकि obviously these private connections by ISP it will be little bit costly than public internet. यह वनान दपान ना ना यह मा करू क्या छु तुथ मेथड कि करो पब्लिक इंटरनेट यूज मगर यह गस गसुन तो प्राइवेटली. ओके, सो मे बी आप सोचे ये क्या कथा वना, बट वी हैव थिंग्स लाइक टू डू दैट कि हम पब्लिक इंटरनेट ही एक्सेस करेंगे बट वी विल यूज VPN. ओके, VPN क्या अगर तुम वैसे आशो तुम पाई क्या VPN हम एक VPN फुल फॉर्म वर्चुअल क्या नेटवर्क, वर्चुअल virtual private network. That means it is a private network मगर ये virtually actually least line connection between these क्या, we don't have any physical direct connections between through, हम ISP through ही जा रहे हैं but it is like a private network. So how is it a private network? अगर हम public internet through जा रहे हैं we will use tunnel. ओके, यहाँ से एक वर्चुअल टनल बनाएंगे, we will use some protocols जो कि ये चीजें करती है. So it will be virtually just like they are directly connected to each other. मगर एम खतर public internet जरूरत अख सो बेस गस आसिन already गस Srinagar to Singapore office somehow connected आसुन. This Srinagar should ping to this Singapore office. उसके बाद हम उसके ऊपर एक virtual tunnel बना सकते हैं which will once we create this virtual tunnel उसके बाद हमारा सारा ट्रैफिक इस टनल से जाएगा. ओके, this is a tunneling protocol. मगर tunnelization setup क्या, not only tunnels, we need our data to be encrypted, encapsulated, authenticated and much more. By default VPN जो करता है ना काम ये बनाए टनल एम से मेन यो है, but since we need many other things like authentication etc etc हम एक तो ये टनल बनाएंगे plus we will encrypt that data CRIPT. और ये सब चीजें करने के लिए we have number of protocols inside the VPN, like GRE tunnel, like IPsec protocol, like DM VPN. Okay, so these are just protocols using VPN. मगर यूजुअली चूंकि हमारा एक इतना मल्टीनेशनल कंपनी है ऑब्वियसली हमें कोई फायरवॉल होगा ना, या तो शायद राउटर यहाँ पे, ये राउटर यहाँ पे राउटर, और हम मैन्युअली ये चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, आई मीन दिस VPN कॉन्फ़िगर करेंगे. और इफ यू हैव अ फायरवॉल हियर एंड यू हैव अ फायरवॉल हियर, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी फायरवॉल्स हैं उनका एक अपना VPN होता है. फॉर एग्जांपल अगर सिस्को फायरवॉल छ देन वी हैव कनेक्ट एनी कनेक्ट. ओके, अगर हमारा पैलो अल्टो का है वी हैव ग्लोबल प्रोटेक्ट, ग्लोबल प्रोटेक्ट. So we can also use vendor specific or we can configure on our own. Choice is ours at that time. जो भी हमारे पास उस टाइम अवेलेबिलिटी होगी, रिक्वायरमेंट होगी, इससे को द स्विचेस पाने के लिए. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. अब हम इंटरनेट समझ आया, वी हैव अ इंटरनेट एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड सेकेंडली हमने थोड़ा डिस्कस किया हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. उसमें पब्लिक इंटरनेट भी आता है, एक प्राइवेट इंटरनेट भी आता है. नाउ टू बी we will take some more example. Power line की power को गया. Let's say this is our, we will elaborate this Srinagar office. ये है हमारा श्रीनगर ऑफिस. पावर आए. इस श्रीनगर ऑफिस में let's say we have few departments. It's one of three different departments. Departments, three different departments, and name any of choice. Finance, I will make it picturized. एक different department. We will name it as
finance, we will name it as HR, we will name it as staff. Inside finance, we have, let's say, 10 people. Inside HR, we have 5 people. And in the staff, we have around 100 people as a staff members. Okay. Fair sure. Okay. So different staffs, different number of peoples. जो हम इस departments ना बना ये it is for your and mine convenience. ऐसे तो finance department ना HR department staff department. But we have to create a network in it. है ना हमें finance में एक network बिछाना है, HR में network बिछाना है, staff में network बिछाना है. पहले देखो requirement. Finance में आत्मा शुद्ध वो वहाँ पे 10 PCs होंगे and these PCs should have a connection to the internet and to the each other. ये HR requirement. Same is with the HR, same is with the staff. जो हमें different categories की है ना finance, HR, staff in the network we have a separate networks for it. इस था वो finance का separate network, इस था वो HR का separate network, इस था वो staff का separate network. What I mean this कि इस था वो separate network. I mean let's discuss about IP address. Okay. IP addressing what we commonly use is IP version 4, but we are transitioning into IPv6. IPv6 पर हो बिल्कुल अगर टाइम स्टार्टस पर हो इस IPv4. IPv4 का जो स्ट्रक्चर है it is 4 octet. 1 2 3 4 4 octet का बना है. It is an IP address and then we have something called a subnet mask. सबनेट मास्क क्या हो सबनेट मास्क should define करा कि एक इस IP addresses में which will be a network part and which part will be the host part. दोनों चीजें डिफाइन होंगी. उसका डिफाइन सबनेट मास्क. ये सबनेट मास्क क्या है we will see in a time. जो भी इंटरनेट पे कोई भी नया प्रोटोकॉल आता है कुछ भी नया आता है it is mostly governed by IANA. आयाना इज अ काइंड ऑफ कंपनी जो कि ये सारी चीजें मॉनिटर एंड गवर्न करती है कि उस प्रोटोकॉल क्या है कि इसको चेंज करो कट करो चेंज एवरीथिंग इज गवर्नड बाय आयाना. So same with the IP version 4 that obviously it was introduced. I don't know who introduced it but IANA is controlling it. And जो हमारा नेटवर्क बढ़ गया IANA ने इसकी क्लासिफिकेशंस दी वायरह प्रोइन का चूज भी वाला एम द क्लासिफिकेशन ऑफ IP एड्रेसिंग एम वन IP एड्रेसेस था वो क्लास A क्लास B class C, class D, and class E. हर कुछ पानी significance. Okay, IP addressing, IP version 4. कितने इंचेस 4 सबनेट्स का बना है और आयाना ने इसकी क्लासिफिकेशन दी है. सॉरी 4 ऑक्टेट का बना है. गुड खोलो बिफोर डिस्कसिंग दीज क्लासेस इस खोलो हो ये हम खोलेंगे थोड़ा ऑक्टेट. ऑक्टेट 1 में x.x.x.x हर कोई 4 octets इथा भी लिखित ताकि तो ही नोट बनाए. IPv4 made of 4 octets. स्पेलिंग कर जो पाने ठीक 2 3 and 4 हर का बाइनरी शुता है पुरमुत इशु थोड़ा खुशक टॉपिक इतनस बट bear it with me, it will be a beneficial for you guys after. Octet chuna issue banamut 8 bitten. Each octet made of 8 bits. Agar is him 8 bit खोलो maybe most of people have already guessed it. So shall binary form 8 4 2 गया 8 2 3 4 5 6 7 8. Okay, this is your octet. Octet to binary. What is a binary? Ultimately binary shock language जो जानते कंप्यूटर से समझा. So binary is either a 0 or a 1. कहाँ के समझी what is 0 what is 1? Exactly. So you have a processor उसमें chicken gates depending upon touch power on touch power off it will respond with 0 and 1 to the input. Depending upon value gas it will generate a thing. Let's say कि should I paint you sorry paint it is made of pixels. अगर इन pixels break करो it will have a some kind of binary value. So each pixel is made of some binary value or together when these pixels are together और हमारे पास एक picture बन के आती है. So everything in the system it is in the binary form. मत है नजर
वापस वन बका 4 ऑक्टेट्स का बना है, ईच ऑक्टेट इज मेड ऑफ 8 बिट्स, और 8 बिट्स को अगर हम खोलेंगे इट विल गिव अस अ बाइनरी वैल्यू व्हिच इज 1 2 4 8 16 32 128। तो यमन सोनवनी ऑक्टेटन छ 1 यमन 8 बिटन बन। इफ अगर ये सारी बिट्स ऑन होंगी, सारी थे ऑन, we have to do an addition to these numbers. अगर मैं सारी कराना addition, we will get a number like this 255। वही क्या इश्यूज भी दोनों इश्यूज होना इसलिए ताकि मैं आपको रेंज बोलूं। IPv4 का रेंज है फ्रॉम 0000। ऑब्वियसली जीरो तो किसी को देंगे नहीं, सो इट विल स्टार्ट विद 1 बट इट विल गो ऑल द वे अप टू 255.255.255.255। दिस इज द अल्टीमेट रेंज ऑफ IP वर्जन 4। क्यों आप क्या कहां से क्या 255? क्योंकि इसमें जो 8 बिट्स का बना है, और अगर सब 8 के 8 बिट्स ऑन रहेंगे इट विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 255। फाइन। Classes of IP address. Now going back to classes of IP address. Classes of IP address जो कि आयाना ने दी है A B C and D। अच्छु मैटर क्या कि एम क्या होता क्लास क्लासेस इसने इसलिए रखी है ताकि इसका नेटवर्क पाथ एंड होस्ट पार्ट डिफाइन। हम वापस आ जाओ उसी कहानी पे। वी नीड टू डिफाइन अ सेपरेट नेटवर्क फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट्स। सो व्हाट वी मीन बाय दिस कि सेपरेट नेटवर्क हो, उस चीज के लिए आप समझो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। किसने दी है ये सारी चीजें? आयाना ने दी है। सो इन द क्लास ए नेटवर्क यू आर at range from 0 all the way up to 127.225.225.225. This is the range of class A. Range के पन्ने जा ठीक class A में छु गोडनुक octet इवा माना network part, all the other octets are host part. Class B में छु गोडनुक zip part network part, all the other parts as a host part. Class D में छु गोडनुक tre part as a network part and the last part as a host part. Okay, so this is a classes of IP address. You can get in IANA. Class A range from 0 to 127. अगर भी दिमो A range को class को, okay, sorry, class A के range में मैं IP address कोई भी निकालूंगा। Let's say user that गोडनुक validity c1.0.0.0 slash कोर में स्विंग किया। ओके, ये इसका ये इसका पहला यूजेबल आईपी होगा 1.0.0.0। रिपीट आफ्टर मी। व्हाट इज द नेटवर्क पार्ट इन दिस? इट इज द फर्स्ट ऑक्टेट। गोई 1 छ एम नेटवर्क पार्ट योर तन आती 1 रोज ना ये तहत इस याद से कनेक्ट करो जब तक उसका नेटवर्क पार्ट सेम रहेगा। ये 1 रोज तक नेटवर्क पार्ट हमारा नेटवर्क इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट नेटवर्क। द नेटवर्क ई याद वाज वैलिड 2। ओके, लेट्स फर्स्ट गिव वन नेटवर्क बहुत ही कुता बोर्ड नेटवर्क 1.0.0.1 चाहिए डेमो ऐसे एक पीसीएस 2 दूसरे पीसी को 3 तीसरे पीसी को 4 चौथे इथे कि नहीं सॉरी 5 इथे कि नहीं 6 इथे कि नहीं 7 ऑल द वे अप टू 4 तक गाइस 255 ये चीज 255 इज टाइम वर्ड एंड बट करी बिट लोकल ट्रांसफर दी ये गाइस 1.1 और गाइस 1.2 1.3 ऑल द वे अप टू 255। Ultimately, you team the Shweka 255.255. They get a bit against 1.0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Each scholars team press. Okay, we have a formula to calculate things. It is 2 raised power number of host bits interest with the formula. Magar alpha of sure million users I can serve one network systems include visit. With a sure million. In case to just bill files finance departments sure million users, then we can use class A IP address as the model that one network. Okay, but utne hai nahi, only 10 hai क्या उसका here it है कि नहीं अनोइस class B IP address. The range is from 128.0.0 इसमें let's say हम लोग 1 लेंगे 0.0 slash भी हमने देखा नहीं। So this is a class B IP address. Yeah, है कुछ इस 0.0.1, 0.2, 0.3 all the way up to 255. बात कैसे 255, 255, 255 और इसकी टोटल रेंज क्या आएगी 65,000 यूजर्स। वो नेटवर्क जो इसका है एक नेटवर्क 128.0.0
या 1.0.0 ये network अथ मस कितना यूजर 65 million I mean host 65 million. ओके, वन मोर थिंग टू बी कंसिडर्ड जो कि मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा विच इज कि इथे इसमें फाइनेंसेस दिमो ना क्या आईपी एड्रेस लेट्स से हमने इसको दिया 10 10 नेटवर्क एचआर को हमने दिया 20 नेटवर्क स्टाफ को हमने दिया 30 नेटवर्क आर दीज आर दीज द सेम नेटवर्क और ए डिफरेंट नेटवर्क same it is in a class A same you got same network we meet it all different network this is the 10 या क्यों ना क्लास ए है ऑब्वियसली दीज आर क्लास ए बट नेटवर्क पार्ट इन सब में डिफरेंट है या तो 10 नेटवर्क पार्ट 10 या तो नेटवर्क पार्ट 20 या तो नेटवर्क पार्ट 30 सो ईच बिलोंग टू डिफरेंट नेटवर्क दैट्स व्हाट आई मेंट बाय बिलोंग टू डिफरेंट वापस क्लास ए नेटवर्क पार्ट गोनिक ऑक्टेट क्लास बी नेटवर्क पार्ट गोनिक जो ऑक्टेट क्लास सी नेटवर्क पार्ट गोनिक 3 ऑक्टेट ओके अगर network part change is that means it belongs to a different network agar network part same root it belongs to a same network okay you go A B to C D and E as yahan pe likhe hai class D IP addresses are reserved and preserved for multicast and broadcast that means ki agar kahan cheez is general broadcast general multicast ke karan we will use the IP address from class D and class E it is wholly and solely reserved for scientific purposes magar obviously 240 से लेके you should बराबर 255 क्या because 255.255.255.255 it is also used as a general broadcast purpose okay इतना भी इतना से लेके fine clear as of now A B and C which is a usable form of IP addresses सिर्फ हम इसी क्लास के IP एड्रेस देते हैं now what is the difference between A B and C आठ में फर्क क्लास ए में गोनिक ऑक्टेट नेटवर्क मान क्लास बी में गोनिक ज़ क्लास सी में गोनिक 3 हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं नेटवर्क पार्ट ताकि हम लोग सेपरेट नेटवर्क्स को सेपरेट नेटवर्क्स ही देंगे फाइनेंस थाउन और सेपरेट नेटवर्क्स में एचआर थाउन सेपरेट नेटवर्क्स में स्टाफ थाउन सेपरेट नेटवर्क्स में and who has defined these sub networks ish ko ayana define agar se by class if IP address dikhna tele she got opted as a network part mein okay now depend पर sorry network खड़ा कि अगर से फाइनेंशियल थाउन सेपरेट गिव इट 10 गिव दिस 20 गिव दिस 30 अगर हम क्लास बी का देंगे या क्लास सी का देंगे 192.168.1.0 दिमो किस क्लास सी में रिमेंबर कितने हैं क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट इसमें नेटवर्क पार्ट है 192.168.2.0 2.160.2.0 tell me are these three हाँ ये तीन क्लास सी के हैं I know it they are from the same class but are they same network or a different network different how can you determine it is a different exactly network part हर कुछ मस कहना के changes इवन now मैंने आप सब लोगों को बोला कि नेट सबनेट मास्क क्या था यूज करते डिटरमाइन जो करा कि कुछ पार्ट नेटवर्क कुछ पार्ट होस्ट सबनेट मास्क इज आल्सो मेड ऑफ 4 ऑक्टेट्स मगर सबनेट मास्क में ये चीज याद था सबनेट मास्क की ये बिट्स ऑन ओके अगर इस हर कहां बिट खोलो ना अतने ना ये वैल्यू 8 बिट्स योर का यम बिट ऑन ना आसा दैट इज कंसीडर्ड एज अ नेटवर्क पार्ट लेट मी रिपीट अगर सोन आईपी एड्रेस 10.0.0.1 अच्छा एम हमें पता है एम वन पार्ट नेटवर्क पार्ट रेस्ट आर द होस्ट पार्ट्स इशा ऐसे पार्ट अगर इस यह लॉजिक के हिसाब दिमो इस अत सबनेट मास्क देन इशू हमारा जो पहला ऑक्टेट है सबनेट मास्क में दोस बिट्स विल बी ऑन या तो द बिट्स will be on rest will be off issue on subnet if the network bit must if the one is bit sorry on us the value will be 255 as we already saw rest will be off this is your subnet go class A the range is from 0 all the way up to 127 if you subnet mask us touch value 255.0.0.0 Use class B subnet mask touch value 255.255.0.0 in class C का जो subnet value है that is 255 क्या you guessed it perfect it is this मगर आज जिस big हिसाब से लेगा that is यह चना
लिख octet on, that means it will be /8. अगर इस slash value वन में left slash is this was a we have a three types to write. This is a dotted decimal format. This is a slash format. You have one more format, that is this binary format. Binary format जो पागा के लिए इसमें पहले दो octets on है, that means 8 गई शुरा. इसमें पहले तीन octets on है, that means 24. Okay. So slash value will be these for class A, B, and C, and dotted decimal format is something like this. Okay. Now coming back to our exam, three departments is we have to put them in a separate. हर का department एक separate department is था, and we finalize it कि इस था finance department 10 networks में, HR department 20 networks में, staff department 30 networks में. All three belong to class A network, class A, and all of them are in different network. Now, चूंकि इमरूद एक different networks में, ये 10 हेक्ने directly communicate करें with 20, ये 20 हेक्ने directly communicate करें neither with 30 nor with 10. ये क्या है कि issue different network. मान से HR यम च करायत English, यम च करायत Urdu, यम च करायत Kashmir. They won't be able to transmit data directly to each other unless there is some kind of translator which will help this 20 to reach to this 20, and there will be some kind of device which will help this 10 to reach this 30. Bukla no pain. You're gonna go. Here is our. मैं थोड़ी बड़ी diagram बनाऊंगा, and we have a separate departments here. You go up and you go down. We have हमने बोला बहुत ज़्यादा customers, I mean employees. फिलहाल मुझे इतना मुझसे जो बात इन पे valid है वही बात हर किसी पे valid है. And we finalized, we will keep this in the 10 network, and we finalized we kept this in a 20, and we kept this in a 30. हर कोई subnet value /8 because they are all from class A IP address. So you want to go into part network part, that means /value plus /8. Yeah, obviously you can write it as 255.0.0.0. Now you can be this is the IP address. So you can be 10 networks. That could be anything 10.0.0.1, 10.2, 10.3. If I can 20.1 to 30.2. Okay. चूंकि ये 10 network is 20 खतर communicate कर, we use router to make communication possible between different networks. Okay. Router is functionality for OS. This is a gist. Use the router chip. Router will help us communicate between different networks. Okay. But चूंकि routers use interface open go वो तो एक ही जाएगा ना obviously. Then we will use switch. ये कार्बो पाका big tool different and कुछ ज़्यादा आसुत. We will use a switch to expand our this 10 network. Okay. यहाँ से 10 network आया. To expand this network we will use a switch. Switch is something like which expands the network. Okay. Now we can keep multiple devices in the same 10 network. ये तहती यह switch ऐसे कराना connect तुम्हारे से 10 networks उसमें. Maybe तो ये सोचा कि ऐसा सा तुलो router पे थे, योर तुलो 3 लिंक कराओ या पर योर तुलो 3 लिंक कराओ या पर योर तुलो वो possible नहीं है. Why क्यों नहीं है? I will tell you in a meanwhile. मगर let me first show you. Okay, let's do it like this. I will show you new window. I will show you how router looks like. Cisco router. Let's go to image. Nice. Okay, let's see this. Open image in a new tab. I will show you how a switch looks like. Okay, nice. Open image in a new tab. This is a router. Yeah, good. This is a switch. Switch aspect has some various ports. While as on router, you have few ports, and you do have some options. So ये में है कोई remove करे theme tray, and वहाँ पे हम ports लगा सकते हैं. Cancel guys. Now this is also a switch. No, we need a router. Okay, this looks perfect. This is a router, a typical router. It has a depending upon आपको कितना बड़ा चाहिए you need.
थी ना सर मैं क्या हम these are ports यम different ports leave it these are connection ports अच्छा connect सही क्या हम वो okay fine these are connection ports जहाँ पे ultimately data transmit होगा and you can see here a cache console port इधर कि नहीं ये router oh this switch these ports जो कि यहाँ से they are all ports जहाँ से actual data transmit होगा and you have few only one port हर कोई devices पे attached एक port as a console port ये console ports important in terms of configuring the things initial configuration ये कि उनके devices जो करें चाहे router को या switch को we need a console port we need a console access क्यों क्योंकि इसी एक पोर्ट से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस स्विच को यदि ऐसे स्विच इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को देन वी कैन मेक एनी ऑफ दीस स्विच ऐसे को रिमोट सेशन आप क्रिएट करें या स्विच से एंड वी कैन डू configuration through the remote but initially you need a console access secondly if you switch gets the reboot yum seri port gasan down okay once a switch or router will reboot all these ports will go down मगर अगर कहाँ चल switch console port पर अगर से connection चाहिए अगर आप लोगों को connection है it is connected with console it will show you this reboot sorry hi ये reboot हो startup configuration गई start RAM गई start ये गई start it will show you the whole process of reboot and it is necessary okay you don't want अगर आप लोग यहाँ से connect हो you will lose the access but through console you can still have an access to the switch it how to say it was about IP addresses यहाँ कोई कारण था गिव अ ओवरव्यू जो भी हमने आज पढ़ा which is public internet we checked private held connections then we checked ISP का हमने कुछ खास जिक्र नहीं किया then we checked addressing उसमें हमने देखा कि IPv4 okay yesterday I said something about addressing वो ये है कि we have two types of addresses IP addresses and MAC addresses let me redefine these things IP address it is a logical address ये तरह आप तो ज़्यादा समझ it is a logical address MAC address is a physical address logical address it can change okay विश भाव होते कितने तरह ज़्यादा समझ it can change मिसाल के तौर पर ये नफर इशी यात networks मस connect 10 networks मस connect okay 10 networks मस connect to so the IP address it is getting इश मिला 10.0.0.1 or something 10 network एमशन सोह की ये वो तो चाव योर एम लोग ये की स्विच से लैपटॉप आप इसको किस नेटवर्क का आईपी मिलेगा 10 का आत गया ये चेंज वो डिपेंडिंग अपॉन कि एमस लोकेशन ये कट शुभित इसका नेटवर्क चेंज होता है ओके सो आईपी एड्रेसेस कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस नेटवर्क के पार्ट हो कैन बी चेंज्ड या चेंज होता है आप खुद से भी चेंज्ड व्हाइल एज मैक एड्रेस it is hard coded cannot be changed unless and until you are changing the nick card या आप Python में खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते हो और you can change this spoof this MAC address anyways as said we don't change और ये change होता भी नहीं okay MAC address given by vendors manufacturers था भी था मैं vendors से लिखे given by vendors and is hard coded on nick card then we checked use MAC address कैसा layer 2 split हाँ we will define it in future MAC address हमें layer 2 पे define होता है मैं दिखाऊंगा अभी just show the just युति ये मिस पीस ऐसा है ना पढ़ने से कैसे नेटवर्क सिस्टम्स करें कम्युनिकेट तो ये स्विच के थ्रू जाएगा और स्विच क्या यूज करता है स्विच यूज करता है MAC address I will come to this part in a moment just give me a moment to write all the things IP address a logical address हम इसमें दो क्लासेस है जो कि यूज होते हैं IPv4 and IPv6 we check it IPv4 because it is mostly common but we are transitioning into IPv6 IPv4 इसमें आयाना ने कुछ classes दी है which is class A it is class B and class C DE we don't use it as such in the environments वो specific to specific things है right so A B and C what is the difference between A B and C we saw कि A is much going this part sorry पहला part as a network part
बी में पहले 2 पार्ट एज अ नेटवर्क पार्ट एंड सी में पहले 3 पार्ट एज अ नेटवर्क पार्ट, A, B, and C. And we also saw something called subnets. Subnet इसकी significance क्या है? Why we need subnets? मैं आपको आगे बोलूँगा. So as a subnet, the network bits are always on. That's it. Go class A is to subnet 255.0.0.0. Class B is 255.255. This class C को as you guessed properly this. Or you can also write a slash value. It will be slash 8 slash 24. Okay, this is for A, B, and C. Please remember it as such. A, B, and C. Okay. We have some different methods to write these. Actually, one is to write a IP address or subnet mask. IP address one. We have different methods. Either we can write in dotted decimal format, or we can write it as binary format. To write a subnet mask, इसमें भी यही है, या तो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, या तो बाइनरी फॉर्मेट में लिखो, या तो स्लैश फॉर्म में लिखो. ओके, ऐसे स्पेलिंग का जो पॉइंट चेक. So these are the methods. Dotted decimal we saw. Use decimal निकलता को वो हमने dotted decimal में लिखा. And binary format. Let me show you the binary format. Binary format like when you saw. Let's say हम ये binary form 192.168.2.1 गोइंग ऑक्टेट में 192 का जो binary format आएगा अथ मज 128 plus 64 bit on. अगर तो ये करो कैलकुलेट 128 8 plus 62 it will be 190 मगर क्या 192 बे करो plus 2. Okay, so 128 64 plus 2 bit on है which means 128 मैं कह लो. Okay, tell us what here अगर that is if that is the case I will show you in here 128 plus 64 192. Okay, so पहली दो बिट्स ऑन है रेस्ट और ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 पछ 168 कोस बिट आस ऑन मैथ के साथ एनालिसिस खाता. यू डोंट नीड टू डू दीस थिंग्स. यू शुड इनिशियली ताकि आप लोगों को समझ आए. अगर इस करो इसके करो 168 plus 64 अगर आस you go 192 which is much higher than what we are expecting. 128 plus 32 go 160 plus 8 go 168 go 192 plus 32 plus wait 192 64 32 16 8 4 2 1. This is the binary value of this, and then we have 1 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. This is a binary value of 192 168 2.0. Again, you don't need to do things, but initially to have a hold on IPv4 you can do these things. So this is a binary format of IP address. Just have to calculate on the base of कि binary value क्या है और इसका value क्या है, and then do the calculations. You will get a binary decimal binary format. Yes, now let's come back to what is router and what is switch, and then we are all good to go with our labs. Let me define a router and a switch. दोनों में क्या फर्क? अगर CCNA में कहाँ चीज़ याद चुत हम सुशी में चीज़ याद हम बाकी सारी practical and rest everything has its logic. Router choose device and L3 device got go boson bookman and L3 device actually like intelligent device, an intelligent device which forwards the traffic on the base of IP address. Okay, now चूंकि मैंने बोला कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, दैट मींस इट हैज सम थॉट प्रोसेस, ये थोड़ा सोचता है और उसके बाद ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट आईपी एड्रेस. वो एमएस निश स्टोर रोजन आईपी एड्रेस. इट स्टोर्स आईपी एड्रेस इन द राउटिंग टेबल. इसके पास एक टेबल रहता है, टेबल जहां पे ये राउट स्टोर करता है कि ये जो मैं बात बोलूंगा आदि जो सारस गड पर जो दुआ तेम पर जो ये लाइन बे इफ्तारस ते पर जो ये लाइन दुआ बात obviously. So each
interface of the router is in the separate network. हर कहाँ interface router को आसा in the separate network. We cannot keep the two interfaces or two links of a router in the same network. या सु करो सु तुत vehicle engineer तेम शु मार दुन. And secondly, it will create a network fault. एमस routers तने बिचारा समझी कि मेशा traffic करूँ transmit ये link किन ये link किन. It will get confused. It will give traffic conflict, network conflict है वैसे तेम से. Okay. So this is the things which you need to remember. एम पद को सुन switch. पर्टिकुलरली जो ये हमारा स्विच है, इट इज एन एंड टू ऑल्सो इंटेलिजेंट डिवाइस which forwards traffic on the base of MAC address. Okay, obviously it stores MAC address in the MAC address table. Magar, your Simpsons functionality, it expands the network. Come back to the example. हर कहाँ router हर कहाँ interface, it is in a separate network, right? You should 10 20 30. Empath kur mein attach switch because we need to expand our 10 network because we have multiple hosts in the 10 network. We expanded this 10 network with the help of switch, right? हर कहाँ interface इस router पे एक separate network पे, and once it is which अगर आपकी पीसी ऐसे को डायरेक्टली लिंक टू द स्विच, मगर एक ही पीसी नहीं है, we have multiple switches. Neither we have this kind of technology कि your Ethernet is off port याथ में your nearan that half port. We don't have this kind of technology. So we are using switch जो कि एक तरफ से एक interface router पे है, दूसरी तरफ switch पे, ताकि so that it will expand the network. And once it is expanded, we can use the multi ports आसान या कितना है को किस तरह 10 networks असमें. Obviously there are more advanced technologies जहाँ पे इस switch को हम broadcast में break करते हैं, but more of it will come with the time. Okay. हम पहले routers का जिक्र करेंगे. In the later part we will discuss the switch as per our जो हमने कल बोला. We will first take the routing into consideration. अगर इस router तो लो internet all things, we just gave the brief about those things. मगर अगर इस router use initial setup ही ना routers गसन पाने communicate करें, right? अश goal सारे को गोइंग के पेट network को शुरू दो devices आपस में communicate करने चाहिए. These routers should be should be able to communicate each other. Why? यम सारी पैरामीटर थे जो याद कि अश हम ये लिंक सेपरेट असमस, ओके, और अगर इस राउटर के साथ कोई डिफरेंट लिंक्स अटैच होगी तिम आसन सेपरेट नेटवर्क्स असमस, राइट? वो ये लिंक छा अक सेपरेट नेटवर्क्स असमस था. लेट्स टेक कि 10 हम लेते हैं 10.0.0.0/8, ओके, वन था बिजनेस के. नाउ अनदर पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि अच्छा यम ज पान में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर, दे आर बोथ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर. Listen it properly. अच्छा थाविन directly connected routers in the same network. Okay, ये point valid है. Okay, याथ routers पे ये interface 10 networks पे you should different router और इसका interface भी 10 network में होगा, तब जाके these two different routers will be able to ping each other और communicate each other. ठीक है, आज से पता if they will be in a different network, misali thao 10 sm thao 20 sm, they will create a route conflict. Yemis routers in zahint yem router ems asne pai yem router route ka ya ye kah jay routers mis agar ye thao 10 sm ye thao 20 sm, so they are in separate network. ये link यहाँ पे अब it will be more like जैसे ये है ही नहीं, two directly connected routers should be in the same network so that you see here routing table बनाए ना पान MSI spy using the router 2 श या सा शुमे adjacent your, okay, अगर ये 20 s में था ये है कि MSI ये neighborship create करे, इसमें routing conflict आती है. I will show you in a practical in a very soon time. So we have to go to the interfaces and configure the interfaces. Routers directly connected us, that will be in the same network. Same like here, using the here using the network as well on this 10 network. These are all in 10 network. You should 10 as well, you should 10 as well, you should 10.1 2 3 इथे कि ये issue sorry ये हम क्यों कर रहे हैं ताकि अगर इस 10 as well that means they should be able to ping each other.
इस पीसी को अगर इसके पास जाना है, इट डज नॉट नीड टू गो टू द राउटर, ये है कि मैं स्विच पैकेट ट्रांसमिट करें डेटा या पेस्ट करें, दैट्स इट। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, लेट्स गो बैक टू आवर फर्स्ट गोल, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर सीसीएनए, दैट इज कि टू राउटर्स जो कि आपस में कनेक्ट है, टू राउटर जो कि आपस में कनेक्ट है, इट शुड बी एबल टू पिंग ईच अदर। कनेक्ट द डॉट्स हियर, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, नाउ कनेक्ट ऑल द डॉट्स टिल हियर। इस राउटर शु L3 डिवाइस, L3 डिवाइस मतलब शु इस OSA मॉडल पे लेयर 3 पे पका, डोंट फॉरगेट एनीथिंग हियर नाउ, इसलिए मैंने बोला कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। L3 लेयर यह पे इम्स फॉरवर्डिंग डिसीजन, डज इट मीन इट डज नॉट नीड अदर इंफॉर्मेशन, इट डज नीड ऑल द इम्स लेयर 2 इंफॉर्मेशन तो जरूरत लेयर 3, मगर ये फॉरवर्डिंग डिसीजन छु ना, इट टेक्स द डिसीजन ऑन द बेस ऑफ L3, L3 information, L3 information को IP address information again use युथि अस इन सिंपल टर्म्स इस राउटर के पास यम्स राउटर छ अके कम पूरी जिंदगी में अके कम सु को पानो राउटिंग टेबल मेंटेन करो, इट हैज अदर टेबल्स एज वेल, मगर इस पको बेसिक पे इसका जो बेसिक काम है इट इज टू कंटेन टू create this routing table. So every time we configure interfaces it will add something, every time we will configure the routes या कुछ भी by the means of any protocol or statically हम इस पे routes configure करेंगे, it will store it in the routing table. One more thing, युथि इस राउटर अनो मूल क्या तथ मज आसन दुनिया भर राउटर और मौजूद, नो इट विल कम एज अ फ्रेश पीस, तो we have to configure the things। क्या आपको अब हर किसी राउटर पे पूरी दुनिया के राउटर्स डालने हैं? नो, वो काम ISP का है। ऑल द राउटर्स ऑफ द ग्लोब, जितने भी पब्लिकली सर्विसेज हमारे पास है, जितने भी पब्लिक सर्वर्स है, उन सब के राउटर्स हमारे ISP के पास ऑलरेडी मौजूद है। वी सिंपली नीड अ कनेक्शन फ्रॉम एन ISP। ISP दी तुम राउटर्स के, उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। राउटर राउटर मैंने आपको कल भी बोला था, इससे पहले भी बोला था शायद चैट में, that we need a Cisco packet tracer initially to create some simulation labs. So in this you have here down time you have couple of devices, you have routers, you have end PCs, actually में जरूरत access router जरूरत, in future हमें switch भी पड़ेगा and we need a PC in future, but also come here you will see a connection type, ये Thor हो, Thor's cache क्या वना सुई fireboard connect, I will just simply click here, drop here, okay। So I took two routers, you have a recording by the way, you can check it anytime later। So here is a router, मैंने यहाँ से drag किया, drop किया यहाँ पे, and then I took this wire और मैं इस wire को इसके साथ connect करूँगा, okay। You have यहाँ पे ही आपको आई information की F0/0 ports connect F0/0 होता है, okay। अगर ये off आस्ता तो जिसमें you need to go to options में आपको preferences आएगा, go to here always shows port labels in a logical workspace। anyways मैंने आपको बोला जो कि हमारा connection होगा, we will take the connection using the console, मुझे चुन करूँ की चीज, okay। here is a console port को तो काटिशु एक हाँ here ना इतनी की अच्छा खबर क्या लिखे तो here is a console, एक issue console, okay। console will take us to the application। मैं आपको आगे दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें, let's keep it simple right now। this is a simulation, you will come to this CLI routers with size, we are in some mode, symbol nazar, this is some greater than symbol, okay। this is called a user mode, router mode। once we log in into the router, we are in the CLI of the router through the console port, it has few modes। ये modes क्या है, so that कि हम एक सिक्योरिटी रीजंस है कुछ, ये जो पहला मोड आया ना यूजर मोड, वी कैन ओनली व्यू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर। अगर मैं लिखना शो आईपी इंटरफेस पर, डोंट वरी मैं सब लिख के दूंगा, डोंट वरी, हाँ कमांड्स, दिस इज ऑल अबाउट द कमांड्स नाउ, दिस इज द कमांड टाइम। अगर मैं कोना शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इट इज शोइंग मी कि उस इंटरफेस से मैं कॉन्फ़िगर कुछ नहीं की। सो हमारे राउटर पे अभी दो ही इंटरफेसेस है, ईथर फर्स्ट ईथरनेट 0/0 एंड फर्स्ट ईथरनेट 0/1, both are administratively down, no IP addresses are assigned, fine। this is one of the configurations, तो मैंने ये user mode में check की, but if I check let's say show running configuration, I am not able to do it, क्यों? क्योंकि इसमें वो privilege ही नहीं है। in order to check all the things on the router, जो भी हो रहा है, configuration हो रही है, traffic pass हो रहा है, I need to go into privilege mode, so I will write enable and now I am in privilege mode।
I can check show running configuration and it will show me the running configuration. No need to bother about this. We don't need it right now. We can also check show IP interface brief. It will give us information about the ports. So privilege models once have access, but we have to configure. We have to configure this f/0/ on one router, and on another router we have to also configure this f/echo base router. Issue router 2 यहाँ पर, issue router 3 यहाँ पर. Hi. This is a router. Fine. Dashwini purchase करूँ क्या configure f/0/0 because they are directly connected to each other. इन दोनों के लिए हमें configuration mode में जाना है. So I will write configuration terminal. Issue router 2. हाँ. Can I change host name? Let's not change anything. Simply we have to configure this f/0/0. इस पे हमें IP address देना है and then चूंकि ये शुगल भाई थे कि चूंकि ये administratively down है, we have to make it up. ये शायद administratively down obviously because of security reasons. कहाँ तक ऐसा हांग तो मगे उन plug करूँ device के तेमिस के connect no. That's why it is administratively down. We have to go into interface f/0/0. While I is configuration if that means we are configuring interfaces. I will write IP address 10.0.0.1 with the subnet mask 255.0.0.0 and no shut. IP address do this कि भाई था उनसे 10 networks उसमें एमसन host हसा शुभान and ये 255 subnet mask क्योंकि ये class A का IP address है. That's why इसका subnet mask ये है. We cannot give slash value here. क्या इसकी proven router in आज के जनरेशन में जितने भी नए आते हैं you can use slash values as well. This is a command to configure the router. एक तरफ configure. Now let's come to another router. Same command. मगर इससे पहले मैं एक चीज दिखाऊंगा. अगर तो करना है show IP route, there is nothing in the routing table. Show IP route, nothing. ठीक है, हम codes कुछ क्या, but there is nothing in the routing table. But I will do the configuration terminal. I will go to interface f/0/0. I will give IP address 10.0.0.1 दूध में already. Mine hack number 1 this be key. I cannot have multiple hosts. It will again create a routing conflict. अगर variant PC same IP address, it will create a routing conflict. And then समझी कुछ 10.1, right? That's why I have to give any other than 2, but I have to make sure it is in network 10 255.0.0.0 because it is class A IP address and then no shut and we can do exit. Fine. Paro is the thread check show IP route. हाँ चलो show IP route पहले कुछ नहीं. Now you are seeing 2 routes in the routing table. Okay. वो ये एक चीज ये मैं define करूँगा कल. बे which way show IP interface brief. It will show you now 0/0 has issue. Ath pet has issue 10 network connect and status up protocol up. Now actually router 3 is pet. Router 2 was ping down. We have to check such in the rahmat go. So we will do ping and we have to give a destination IP. Destination IP is 10.1. You say so misses. First it will do an ARP, rest will be successful. It showed you a 4 exclamation marks. Rate is 100% success. Congratulations. You have configured 2 routes. Now see, I know it was a fast, but we have to do it so many times कि बस easy process. Come back to the theory part. This is your theory part. जहाँ पे हमने 2 routers आपस में connect किए and we gave an IP address to the interface. इस करो गलत पड़ती है. इस दिमो यात आख network खुद दिमो बदल पात वशो क्या गया. But चूंकि पहले हमने सही किया. Once we configured a interface on a router, कितनी ऐसे configure को enroll host the routing tables में scheme. Once a interface is configured on a router, it puts 2 routes in the routing table. Akchu thama connected, इसको बस akchu thama connected, bakchu thama local. See. Show again we will do show IP route. Connected behind to local. So many information here. Dapan connected as mentioned dapan मैं उस link से ना connect message वो 10 network पे है. Okay, जो मेरे साथ link connect है वहां से 10 network है.
और जो मेरे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है दैट इज 10.2 ये कर इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर कनेक्टेडस में कि अम तरफ कुछ नेटवर्क आई हैव अ 10 नेटवर्क ऑन Ethernet F0/0 and my local route is 10.0.0.1 which means अगर यम्स routers निश इना ping from 10.1 that is 10.1 चुका सी ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा एंड इट विल सी कि 10.1 has issues भी ये खुद रिप्लाई देगा अगर एमएस निश इना 10.10 10.2 10.3 10.10.5 whatever the request it will come ये अपना राउटिंग टेबल अगेन चेक करेगा एंड इट विल सी कि 10 नेटवर्क हसा में ये इंटरफेस की 10 नेटवर्क जो है वो मुझे इस इंटरफेस पे है वो कह नेटवर्क जिस 10 खतर कर और वो 10.1 नहीं होगा once the request will come to it it will check the routing table use 10 network it will send the traffic to here it does not matter और अच्छा ना अच्छा ये मिशन सा खबर की सेकंड पॉइंट अगर when कह कर पिंग रिक्वेस्ट टू 20 लेट्स से कि ये वाला जो इंटरफेस है इट इज इन 20 नेटवर्क ओके और यहाँ से स्विच भी कनेक्टेड है एंड देयर आर 20.1 2 3 अगर यूर करना पिंग 20.1 ये राउटर अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा आर देयर एनी 20 राउट्स इन दिस राउटिंग टेबल none actually 20 as कहीं तो राउटिंग टेबल कहीं तो राउट सो इट विल सिंपली डिस्कार्ड दिस पैकेट fine go we have somehow to create all the routes in this routing table वो हम कैसे करेंगे वो हम कल देखेंगे but as of now do the simplest layer take two routers और उनको आपस में connect करो okay I will also mention the commands here what we did हमने ROUTR उठाया routers में जो कि it will create a routing table okay so we configured interfaces configure in there are three modes in the router first is user mode less privilege LIDG मतलब only we can check few configurations in this mode of CLI को command line interface emphasize privilege modestness most privilege can check anything in this mode and ultimately we have configuration mode we can configure the router in this mode think about it this way as कर interns hire ठीक है network interns तुम ची दिमा इस मदद associate role ची दिमा we will only give a user mode क्योंकि obviously we have to create user name login वो हम बहुत आगे देखेंगे security में user name login क्योंकि तुम करना login into the router CLI तुमन चले सिर्फ user mode अगर तुम चाहना privilege mode में गए तुमन मांग सो password और सेम केस कि अगर वह कहाँ कल खराब इंटर उसके लिए हमें कुछ देना है थोड़ा प्रिविलेज तुम वुचन वारिया ज्यादा तुम रिसर्च करें वारिया ज्यादा वी विल गिव प्रिविलेज मोड मगर सो है कॉन्फ़िगरेशन मोड में कि अनलेस दे हैव अ पासवर्ड टू गो इनटू द कॉन्फ़िगरेशन मोड क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी ओनली फॉर सीनियर इंजीनियर्स ताकि छेड़खानी गए कॉन्फ़िगरेशन के नेटवर्क गए डाउन के दैट्स व्हाई देयर आर 3 मोड्स so that we have some level of privacy in our network secondly you see user mode is a image you should have था you should one exams this mode when you are in this mode you will type enable you to configure type करें you will come into a privilege mode में छोटे लिखो config ऐसा कोई ये ना configuration so दे लिखी के enable you have to be in the privilege mode to write configuration terminal it is the configuration terminal which it will take to the configuration terminal and here first we have to go into interface F0/0 at interface aspect is configure kara IP address code which is in 10 network or host it is 1 chunki issue due to security reasons as administratively down we have to manually type no shutdown we came very long the way till here and we also checked few commands वो हमने देखा show IP interface brief which is shows the interfaces on the router yashyalai on the router yashyalai show IP route it shows okay routing table
and you also have that's it, that's it. इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब ये उस बारे, that's why I recommend to create a notes. और ये वीडियो I don't know when I will share it, I will try to share it as soon as possible. कल मैं शेयर करूँगा because I'm getting late. ये क्यों हूँ? You have to write configure. Yeah, अगर तुम टैब दबाओ ना, यहाँ ये नेक्स्ट पान configure terminal enter. Okay, interface F0/0 enter. Empath IP address. Okay, इसे can you know shutdown. That's it. END. We can go back to it. And यहाँ पे हमें privilege mode में check कर रहे हैं, ना कि configuration mode में. हाँ, आते जो वारियर ज़्यादा ख्याल. You know, अगर ये करूँ, अगर मैं configuration mode में लिखूँ ना show IP route यहाँ नहीं की. Okay, I have to go exit, go back to this mode, and then right here show IP route or whatever you want to see. Show running. हाँ, running configuration हम आगे जाके देखेंगे. Not as of now. Do yourself a favor. जो भी हमने पढ़ा आज कैश करो, आज रिवाइज करो, इस पे नोट्स जरूरी बनाना है. देखो आप लोगों को ये फ्री मिल रहा है, इट डज नॉट मीन इट इज फ्री फॉर एवरीबॉडी. ओके, अगर हम प्राइसिंग की बात करेंगे ना सीसीएनए की, सीसीएनए द प्राइस इज फ्रॉम, अगर तुम घटिया जाए पर तुम हेनो वर्ड्स, अगर तुम असल जाए पर तुम हेनो 10,000 से लेकर 15,000 तक. ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है. यू आर, आपके लिए फ्री है, मगर जो ये होस्ट कर रहे कोडिस एंड व्हाटएवर उनके लिए फ्री नहीं. तिमन पे मैं फीस दूं करना मुफ्ती, इसे खशकदमा खाल बो पानस मुफ्ती, बिकॉज मेरा टाइम जाता है, मेरी मेहनत जाती है. सेकेंडली मैं आपको बोलूंगा, इवन दो इट इज अ फ्री, कुछ नहीं आप चांद जाड़ वाले ना क्या, अगर आप लोगों को इससे फायदा लेना आएगा यू कैन टेक द फायदा. ओके, सो इंशाल्लाह डेवलप योर स्किल्स. बुझो कॉलेजस में छु गसा इंसान बड़ राइट, बकर के बंद. I will just close it. इंसान जो गसा कॉलेजस में मुड़ छु गसा क्या, तत छुन इंसान पढ़ान क्या, ना क्या क्वालिटी और ना ही उतनी कुछ क्वालिटी. मैं क्या बाशु बासा मैं थोड़ी सेव हुई. Now let me check it later. मैं बासा ये रूट ने सेव है. I believe it's not saved. I had to save it, मगर मैं रूट ने सेव है. चलो एनीवेज आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे. The thing is, क्रिसमस सेव रिकॉर्ड में किसी ने मत रिकॉर्ड किया था. Okay, great. Thank you very much. Send it to me, okay? ताकि वो सोच पाए बाकी सारे. Secondly, प्लीज ये सेंड कीजिएगा. हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था कॉलेज में ये स्किल रोज़ा इंसान उस पढ़ने के. ओके, तो थोड़ा बहुत जो भी हमने पढ़ा ना, इट वाज, सॉरी, हाँ मुझे आप डायरेक्टली सेंड कीजिए.